नमस्कार गाइस, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। आज के इस सेशन में वी विल सी हाउ 2024 का GS1 पेपर मेंस का वाज आल्सो इन लाइन विद जस्ट exhaustive analysis of previous year questions, having covered basic sources really well and just applying that knowledge over and over again with adequate answer writing practice. अभी क्या होगा, जैसे ही पेपर आ गया हर व्यक्ति अपने मन की बात लेके एक एनालिसिस आ जाएगा और मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू शो यू हाउ दिस पेपर वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, कितने नुआंस्ड क्वेश्चन पूछे थे, कैसे करंट का क्वेश्चन आ गया, कैसे स्टैटिक डायनामिक डायनामिक स्टैटिक का लिंकेज है। एंड इन द एंड यू विल बी लेट टू बिलीव कि यार इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, इस एग्जाम को सिर्फ कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति क्लियर कर रहा है। समथिंग इट्स एन assertion that I personally like to disagree with. I have said it over and over again, and we will see the illustration now as to how, just like in prelims, in mains also, all you need is analysis of your very, very basic sources, NCRTs, Lakshmikant, Spectrum, exhaustive analysis of previous year questions, and then application of that knowledge with answer writing specifically in mains over and over and over and over again. राइट, दिस इज समथिंग आई लाइक टू कॉल शेडलॉकिंग। उसमें बहुत डिटेल में जाने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वेरी क्विकली वील जस्ट कम टू क्वेश्चंस वन एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर वन, underline the changes in the field of society and economy from rig vedic to later vedic period. I think 2 साल पहले ही they have again asked a question on vedic period. बार बार they have run out of themes, they don't have a lot of themes, that is why they repeat the themes, and answers also are very closely related in from one year to another. Second, the real art of shadowing is being able to utilize your basic sources, basic knowledge, plus apply thematic knowledge and then practice answer writing. तो चेंज जब भी होता है किसी प्रीवियस पीरियड से लेटर पीरियड के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, फॉर इंस्टेंस हाउ विल दैट चेंज लुक लाइक? दे विल शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल लाइफस्टाइल। या तो ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगर पढ़ी भी नहीं हुई एनसीईआरटी में, याद भी नहीं आ रही, बिकॉज मेमोरी, एज वी लाइक टू कॉल इट ओवर एंड ओवर अगैन, इज लाइक परशुराम स्कल्स टू करना। It will let you down when you need it most, but very quickly you can make reasonable assertions from the way this question is structured and with the knowledge of your basic sources, that you can write adequate number of points. प्रॉब्लम एक टाइम के बाद हो जाती है कि पॉइंट ज़्यादा है, लिखने के लिए स्पेस कम है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इमर्जेंस ऑफ सोशल हायरार्की, हायरार्की ज़्यादा स्टैग्नेट हो जाएगी। यू विल हैव ग्रोथ ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिकली इट विल इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मेटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होंगे। जस्ट यूजिंग योर framework, basic framework we have discussed in Sherlocking over and over again, life cycle का framework, GS के syllabus का framework, to write a comprehensive and holistic answer. Similarly, question number two, very similar questions they have asked on what Cholas in the past. अब पल्लवास पे पूछ लिया, both Pallavas and Cholas are known for what? Dravidian architecture. Answer by and large बहुत हद तक सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस examples will just change. Instead of giving examples from Cholas, example Pallavas के आ जाएंगे. Answer 90% is going to remain the same. Construction of rock cut temples, development of Dravidian architecture, different, literature की patronage, promotion of Tamil literature, establishment of educational institutions, पेंटिंग के बारे में बात हो सकती है, पोएट स्कॉलर्स के बारे में बात हो सकती है, मेटलर्जी पे बात हो सकती है, टेक्सटाइल पे बात हो सकती है। whatever we have discussed in syllabus parsing, also in PYQ mapping, 100% applies here using your very basic common sense. You can write a very good answer with your basic knowledge, you're good to go. Free analysis I have also done 2023 की GS1 की, it is again in line with the analysis we are doing now, which again drives home the point, the same point over and over again. कोई मोती पोती नहीं पढ़नी है, कोई बिना बात के नोट्स मोटे मोटे नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सोर्स जिस पे मैंने पहले ही डिस्कशन कर रखा है, प्लस एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यूर डन। क्वेश्चन नंबर थ्री, बार बार उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है। 2 साल पहले भी 2021 में या 22 में अगेन आज क्वेश्चन ऑन CDM एंड QIM, फिर से पूछ लिया QIM में व्हाट वर द इवेंट, सच अ बेसिक क्वेश्चन, एंड येट आई सी पीपल रीडिंग स्पेक्ट्रम कवर टू कवर। क्यों पढ़नी है कवर टू कवर व्हेन दे आर रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2-3 सर्टन सेक्शंस? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? इतना बेसिक सवाल है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, सारा का सारा जो बेसिक टाइमलाइन वी रीड, you have to do that. Leadership of Gandhi ji, British focus on war efforts, disillusionment with British promises always works. सारे के सारे सवाल में colonialism के ये point आएगा ही आएगा, and point out the results. बाद में हमेशा क्या हुआ है, आफ्टर द मोमेंट व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू? ब्रूटल सप्रेशन, अरेस्ट कर लेंगे लोगों को, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल वीकन भी होगा, एंड इमरजेंस ऑफ लोकल लीडरशिप विल कम इन, a lot of things will come in. Very basic question,
nothing to worry about. Question number 4, again a very basic question. What is sea surface temperature rise? English में ही आंसर है. Temperature बढ़ गया, that is what sea surface temperature rise. It leads to increased energy. How does it affect the formation of tropical cyclone? एनसीईआरटी से छपा हुआ क्वेश्चन है 11th की फिजिकल. एंड येट आई सी पीपल रीडिंग खुल्लर. कोई पढ़ रहा है, कोई पता नहीं मोटे मोटे 200-300 घंटे के लेक्चर देख रहा है, फिर ये सवाल भी नहीं आता उसके बाद. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन. यू गेट गुड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यू लुक एट इंक्रीज रेनफॉल फ्रॉम स्टॉर्म्स. सिंपल सी बात है. इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट है साइक्लोन में? बिल्कुल बेसिक सवाल है. जस्ट लुक एट द इम्पैक्ट, हाउ साइक्लोन इज फॉर्म, रिलेट द फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड, एंड you're good to go. Nothing extraordinary. And then write about iska in the end impact kya. There's a potential feedback loop with climate change. There's a need for disaster preparedness. You can make it more holistic towards the conclusion, bada briefly, and you're good to go. अगला क्वेश्चन. वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स दैन स्मॉलर टाउन्स? अब कौन सी इसमें थीसिस करनी है सवाल के लिए सोसाइटी के? दीज क्वेश्चंस आर सो कॉमन सेंसिकल. अब एक बड़ी जगह होगी, वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे ना छोटी जगह के कंपैरिजन में, क्योंकि इट इज़ मोर डेवलप्ड. सिंपल सी बात है. अब ये तो नहीं लिख सकते कि ये डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे. यू हैव टू फॉर्मलाइज. You have to do what? Formalize and dimensionalize that one basic essence that you know about the question. That is what we like to call the art of answer writing. वरना आंसर तो वही है कि यार मोटी जगह बड़ी जगह लोग जाते हैं, छोटी जगह लोग नहीं जाते हैं. लेकिन इसको लिख नहीं सकते एक लाइन को देसी भाषा में. You have to formalize it, verbalize it. That will only happen with practice of answer writing over and over again. There are more job opportunities. There are higher wages. देयर इज बेटर इंफ्रा, देर इज बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. जीएस के फ्रेमवर्क से हम डिफरेंट डायमेंशंस को कनेक्ट करें हैं. देर इज ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस, देर इज पोटेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, सो ऑन सो फोर्थ. 20 पॉइंट लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो, लेकिन पेपर में जगह नहीं है इतनी, तो चूज करने पड़ेंगे, प्रायोरिटाइज, एंड यूड बी गुड टू गो. क्वेश्चन नंबर 6. फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट. इतना ज़्यादा न्यूज़ में है क्लाउड बर्स्ट, एंड बार बार डिजास्टर का एक दो सवाल पूछ रहा है जीएस1 में. वी हैव डिस्कस्ड. कोई भी इसके अंदर थीसिस नहीं करनी थी. सडन एंड इंटेंस रेनफॉल इज व्हाट क्लाउड बर्स्ट इज अबाउट, एंड इट्स अ लोकलाइज्ड फिनोमेना. सारी कहानी इसके बारे में लिख दो. कैन लीड टू फ्लैश फ्लड्स. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी रीड फर्स्ट हैंड इन न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का मोस्टली ओवरलैप है मेंस के साथ, और मेंस में भी 4-5 ही टॉपिक है. इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वाला पार्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट जो करंट से वो पूछ लेता है, उसके अलावा ज़्यादातर स्टैटिक ही है. तो करंट 50-50 भी नहीं है. करंट एक्चुअली इज 15-20%, वो भी इन स्पेसिफिक पोर्शंस में. दैट यूड बी एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर वेल. क्वेश्चन नंबर 7. नहीं पढ़ सकते हो ये चीज़ें इन अ बुक. नाउ समबडी विल ब्रिंग यू अ न्यूज़पेपर आर्टिकल कि भाई पूरे साल के न्यूज़पेपर के अंदर किसी ने 1-2 दिन बिल्कुल छुटपुट छोटा सा आर्टिकल लिख दिया होगा, और लोग दिखाएंगे देखो एक्सप्रेस में आ रखा है या इस किताब के इस रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है. नहीं चाहिए. यूज़ योर कॉमन सेंस. What is the concept of a demographic winter? विंटर का कोलोकियल मीनिंग है डाउन साइड, नेगेटिव. समर आ जाता है मतलब स्प्रिंग, समर मतलब पॉजिटिव, ऑटम, विंटर माने नेगेटिव. ये बेसिक चीज़ है जो बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक विंटर मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है डेमोग्राफी के साथ. डेमोग्राफी इज अबाउट पॉपुलेशन डायनामिक्स. तो पॉपुलेशन कम हो रही है या स्टैग्नेटेड है. अब वो नेगेटिव क्यों होगी? हाउ विल इट बी नेगेटिव? वो सिमिलर, वेरी वेरी सिंपल. भाई लोग, काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे, बर्डन रेट, डिपेंडेंसी रेट विल इंक्रीज. विच बुक डू यू नीड टू रीड to do this? There'll be increased pressure on social security, potential economic slowdown, changes in political priorities. Also, you can connect different GSK dimensions, but the real challenge is understanding the structure of the question plus having the right comprehension to make sense out of what has been asked. Question number 8. Distinguish between gender equality. जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है सब बराबर है. सबको बराबरी मिलेगी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स, सिंपल इज दैट. नंबर 2. जेंडर इक्विटी. जेंडर इक्विटी का मतलब है हमें बराबरी पे लेके आना है, और बराबरी पे लेके आने के लिए वी माइट नीड टू डू थिंग्स दैट विल लीड फ्रॉम दिस टू दिस, बस. तो मतलब फेयरनेस इन ट्रीटमेंट, एंड इट मे रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेज. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब हो गया कि नाउ जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम, जेंडर इज नो लॉन्गर बाइनरी. तो in context of this women it is called women empowerment because of the historical disadvantages. क्या करना था इसमें? बेसिक कॉमन सेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ योर बेसिक नॉलेज. अब कई सारे लोग इसका काउंटर थीसिस देते हैं कि फिर पढ़ने की नीड नहीं है. दीज आर द पीपल विच देन पुश यू टू बाय मोर एंड मोर नोट्स, न्यू एंड न्यू बुक्स, इन द होप दैट एक दिन इतना पढ़ लेंगे कि पॉइंट्स आएंगे. नहीं. Any common sense which is utilized without the edifice of basic knowledge is absolutely useless. But
after a de minimis reading, after a bare minimum understanding, you need to apply that knowledge using common sense. Otherwise you are doomed for failure. Either you'll understand today और 4 साल निकलने के बाद समझ में आएगी ये बात. Very very simple question. It is all about, what do I say, basic knowledge, comprehension of the question plus application using exhaustive PYQ analysis जब घर के अंदर करे हो, before you're going in the examination hall. you know and why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? क्योंकि challenges तभी तो handle करोगे. You will ensure that resource distribution will happen on those lines. You will have to challenge the stereotypes social flux के लिए maintain करने के लिए. You will promote human rights. You will foster innovation. N number of points again from different GS you can connect, and you'll be good to go. Question number 9. Intercaste marriages between caste which have socio-economic parity have increased, but this is less true of inter-religious marriages. कि अब inter-caste marriage तो हो रही है जिनमें मे बी कुछ इक्वालिटी है, कास्ट डिफरेंट है बट कुछ पैरिटी है, लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं हो पा रहा है. क्या रीज़न है भाई? कॉमन सेंस से क्या रीज़न होगा? कौन सी थीसिस करोगे, कौन सा रिसर्च पेपर करोगे? इसका मतलब है यार, कास्ट इज मोर फ्लूइड. पहली बात तो रिलीजन इज मोर स्टैग्नेंट इस टाइम पे, नंबर 1. नंबर 2, रिलीजियस आइडेंटिटी इज मोर इज स्ट्रॉन्गर दैन कास्ट आइडेंटिटी. लोग कास्ट को भूल रहे हैं लेकिन रिलीजन को नहीं भूल पा रहे. what else you need to read? There is more family resistance, there is more social control, there is less education, less awareness. There are issues like legal ramifications भी intercaste marriage के अंदर इतनी ramification नहीं है. inter religious marriages are governed by different rules altogether. उसकी अपनी कहानी है. There is, तो उन सारी कहानियों को लिखना है और बस सार पहले समझना है कि क्यों कास्ट के अंदर चीज़ें हो रही है लेकिन रिलीजन में नहीं हो रही, क्योंकि ये ज़्यादा स्टैगनेंट है, ये थोड़ा फ्लूइड हो गया. इसी बात को फॉर्मलाइज करके आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को डेवलप करके 6 7 8 9 पॉइंट लिख देने हैं एंड यूड बी गुड टू गो. In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGO and private sector would be most productive? बार बार हम collaboration के बारे में बात कर चुके हैं. In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration? लाइफ साइकिल लगा दी, नहीं कुछ भी नहीं करना है, और लाइफ साइकिल के डिफरेंट आयाम को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जोड़ देना है. यू कैन से दैट पॉलिसी सरकार दे देगी, डेटा सरकार जमा कर देगी. एनजीओ जो है ग्रास रूट के कनेक्शंस को डेवलप कर लेगा, प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन पे काम कर लेगा. Government can focus on large scale funding deployment, NGOs can focus on specialized expertise, private sector can focus on infra. So what you're doing, you're combining life cycle plus GS का framework and you're good to go. बार बार कह रहा हूँ, basic knowledge and application of common sense on top of exhaustive PYQ analysis, that will take you to places. If you want to take a lot of years in understanding it and read more and more and more and more books, be my guest. अगला सवाल फिर से रिपीट कर दिया. The great Cholas are no more. Their name is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture. चोला से इनकी बार बार अफिनिटी है. चोलास गुप्तास, 3 4 चीज़ें ही इनके पास. बार बार दे कीप आस्किंग, शुड हैव वेरी गुड पॉइंट्स. इनके पास दे हैड ग्रैंड टेम्पल्स, दे हैव led to important developments in Dravidian architecture. Everybody knows this. ब्रॉन्ज कल्चर के बारे में बात कर दो, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इनका क्या इन्फ्लुएंस था. इरीगेशन सिस्टम, टाउन प्लानिंग, डिफरेंट जीएस के फ्रेमवर्क्स यू कैन एम्प्लॉय, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल सिंथेसिस. Points will be more, pages will be less. So it is all about having that basic content and then practicing and then prioritizing. Real art is when you have 20 points but you can only write 15. How do you prioritize those 15 from this pool of 20? Question number 12. How far is it correct to say that First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? फिर से डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर पे सवाल पूछ लिया है. कभी फर्स्ट पूछ लेगा, कभी सेकंड पूछ लेगा, कभी इंटर वॉर पीरियड पूछ लेगा. 3 4 सवाल ही है इसके पास from this domain. And yet I see people read elaborate detailed things from normal law which have no significance ना life के अंदर ना एग्जाम के अंदर. पढ़ते रहो, कोई एंड नहीं है. It was about rivalry of European powers, competition for resources, alliance systems were created. सिर्फ जो basic content है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसी को it is all about retrofitting that context to make it relevant to the demand of the question. That is it. Fear of shifting balance of power due to Germany's rise, उसको curtail करने के लिए miscalculation in what diplomatic maneuvering हुई थी, honor and prestige consideration, failure of diplomacy, वही सारी कहानी है. ज़्यादातर points will come from फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की situation and some point will come from war at large. War तभी होगी जब डिप्लोमेसी का फेलियर होगा. प्रेस्टीज, प्लॉय, पावर, अलायंसेस, सब चीज़ें होंगी. और कुछ एग्जाम्पल्स लिख देने फ्रॉम योर नॉलेज, you'll be good to go. Question number 13.
हाउ फार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन बिफोर. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया. क्यों? क्योंकि इंग्लैंड अब एक्सपोर्ट करने लग गया फिनिश गुड और इंडिया इंपोर्ट करने लग गया. अगर इंडिया चीप रेट पे इंपोर्ट कर लेगा तो फिर इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है दे विल टेक अ हिट. सिंपल सी कहानी थी. यू जस्ट हैव टू वर्बलाइज इट, फॉर्मलाइज इट एंड फॉर्म अ लॉट ऑफ पॉइंट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज ब्रिटिश पॉलिसीज वुड हैव फेवर्ड their own products. These were more machine goods, these were mechanized goods, so the cost would be less inherently even after importing. you know Cheaper mass produced items were more affordable than more expensive handicraft cottage industry. इन पे ध्यान भी नहीं दिया गया. तो there were what both pull and push factors. कुछ इसके पॉजिटिव थे, कुछ इसके नेगेटिव थे, जिनकी वजह से this led to the decline of handicrafts and cottage industry. Changes in consumer preferences also happened. Social status changes for artisans. जब it is all about entering into that vicious cycle. अगर पहले ही इनके पास पैसे आने कम हो जाएंगे, they will still have to increase cost further to still maintain their livelihood, और फिर से they are kind of going out of competition due to that cycle. So that is all you have to write, nothing extraordinary. Question number 14. बार बार ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. डजंट मैटर एट ऑल कि अब ये गैंजेटिक वैली के बारे में पूछ रहा है या भैया पानी के बारे में इन जनरल पूछ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो इसने पहला आयाम दे दिया ये, और फिर फूड सिक्योरिटी से रिलेट कर दिया. These two again are much favored themes. Last year directly I think question 3-4 was about food security. In what context? Another, declining gangetic, groundwater and food security. So reduced water availability for irrigation, potential decrease in agriculture productivity. सारी की सारी जो लाइफ साइकिल है एग्रीकल्चर की प्लस ग्राउंड वाटर की जो कहानी हम पढ़ते हैं, यू हैव टू कनेक्ट इट, यूड बी गुड टू गो. इट विल ऑल्सो लीड टू अ फूड सिक्योरिटी में तीनों आयाम है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी. रिलेट with both of the all three of these things and you'd have enough point. 3-3 4-4 point under each head, 10-12 point हो गए, and you're good to go. Pressure for water management policies will be there. Will also lead to social unrest, जिसकी वजह से food security पे issue हो सकता है. Increased competition, impact on industrial development also. Will need technology, so on and so forth. You're good to go. Question 15. ये नॉर्दर्न लाइट्स सादर्न लाइट्स बचपन से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है. हाउ आर दीज ट्रिगर्ड, कैसे होगी, कुछ भी नहीं हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग हियर. इट इज ऑल अबाउट इंटरैक्शन ऑफ सोलर विंड्स विद अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर. अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ इंटरैक्टिंग विद सोलर फ्लेयर. सिंपल एज दैट, खत्म होगी बात. इतनी सी कहानी को इसका मैप बना दो, बता दो यहाँ यहाँ होता है. इट हैपन्स यूजुअली इन हायर लैटिट्यूड्स, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा फनल है of these particles. That is where the interaction happens. अगर ये if this is happening because of interaction of magnetic field plus solar particles, solar flare, तो ये वहीं हो रहा होगा ना where this would be happening. Now this is mostly happening in higher latitudes. इसका मतलब है this condition is only present there in these regions. एक make a globe kind of a thing and you're good to go. It is influenced by solar activity cycles. It is mostly in high latitude regions. It can interfere, इसकी outcome भी बताओ. It can interfere with the radio signals. The shapes, patterns could vary. Also it leads to what? Tourism. Also potential indicator of climate change. अगर if any change happens here, it means that the underlying factors are changing and climate change is a causal factor to it. Good to be अच्छा holistic answer you can write. Question 16. What is a twister? बाउंसर लग सकता है बट यूज़ योर कॉमन सेंस. व्हाट इज़ अ ट्विस्टर. अब ये सैफ अली खान की मूवी का जो गाना है ट्विस्ट, उसके स्टेप के बारे में तो नहीं होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन कहाँ से होगा, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है. ट्विस्टर, ट्विस्ट इज समथिंग दैट ट्विस्ट. व्हाट ट्विस्ट. रिलेटेड क्लोजली टू साइक्लोन. कुछ नहीं होता है, साइक्लोन जैसी एक चीज़ होती है. अगर इतनी डिटेल समझ में आ गई है, यू विल हैव इनफ कॉन्टेंट टू राइट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. ट्विस्टर के बारे में लिख दो, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव सोचना पड़ेगा. What are the majority of twisters observed in areas around Gulf of Mexico? तो साइक्लोन बनने की जो भी कंडीशन है, मे बी दे आर बेटर फुलफिल्ड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. क्यों? वहाँ वार्म मॉइस्ट एयर है, वहाँ जेट स्ट्रीम की पोजीशन है, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ गल्फ प्रोवाइड्स कांस्टेंट मॉइस्चर. You have they can occur year round. Impact of climate change and number of things you can write. The only challenge was connecting it with cyclone, और वो नाम से दिख रहा है कि कुछ साइक्लोन जैसी चीज़ है. That is all you needed to write a very good answer to this question. Question number 17. What is regional disparity? Regional disparity माने एक चीज़ बढ़िया, एक चीज़ बेकार. Simple as that. तो यहाँ पे एक हायरार्की है. Diversity में these are different. One is not necessarily better from another.
सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, पर कैपिटा इनकम ऊपर नीचे हो सकती है, एजुकेशन कैन बी मोर और लेस, लिटरेसी कैन बी मोर और लेस, infra development can be more or less. On the other hand, cultural practices are diverse. Languages could be different. One is not better than the another. Variety in occupation, diverse climatic conditions, geography, so on and so forth. And how serious is the issue of regional disparity? Though, of course, India has regional disparity. Concentration of industries are there only in one region. Uh, wheat rice farming के भी जो फायदे हैं, they're mostly accruing to the western part of the country. Disparity in agriculture productivity, disparity in different GSK dimension, economics, urbanization, national unity को challenge इन चीज़ों से, disparity in access to technology, funds, right? Outcome क्या है इसका, what will happen, and बड़ा briefly what is government doing, what has been done, and more needs to be done. Good to go. Content ज़्यादा हो जाएगा. Once you understand the question, you'll have more content. The challenge will be your ability, will lie in your ability to structure it and make a very good answer out of it. Question number 18. Despite comprehensive policies for equity and social justice, फिर से रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया. पॉवर्टी के बारे में पहले भी सवाल पूछ रखा है ऐसा ही, कि सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी ग्रोथ क्यों नहीं है उन लोगों के लिए, फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस. व्हाई आर दे स्टिल अंडर प्रिविलेज? दिस कैन बी स्पोकन अबाउट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, अबाउट दिस. व्हाई इज इट स्टिल हैपनिंग लाइक दिस? तो भैया क्योंकि अब भी देर आर अंडरलाइंग इशूज, देर आर स्टिल अंडरलाइंग इशूज, एंड मे बी सम ऑफ द पॉलिसीज आर इनफेक्टिव. दो ही रीजन हो सकते हैं कॉमन सेंस से. तो या तो परसिस्टेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज है, कास्ट स्ट्रक्चर्स अब भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, जेंडर इनक्वालिटी है, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स इन पॉलिसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, inadequate representation in political bodies, and number of points from GS you can write. The only challenge was in understanding कि why. अगर एक बारी why और theme पकड़ ली, once you catch hold of the theme, answer is redundant. Questions will change, answers will change. The only common template is catching hold of the theme. Question number 19. Question number 19 says globalization has increased urban migration by skilled young unmarried women from various classes. तो इसने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन जो भी पॉइंट्स मेन के लिए इन जनरल रहते वो पॉइंट वुमेन के लिए भी रहेंगे, प्लस कुछ वुमेन सेंट्रिक पॉइंट्स आएंगे. तो वेन एवर दे मेक थिंग्स मोर स्पेसिफिक, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू राइट मोर पॉइंट्स, क्योंकि जो जेनेरिक पॉइंट्स है वो तो रहेंगे, प्लस वट एवर इज द कॉन्टेक्स्ट, दैट स्पेसिफिक पॉइंट्स विल इंक्रीज. हाउ हैज़ दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड द फ्रीडम? बढ़ेगी फ्रीडम एब्सोल्युटली, बट लिख नहीं सकते ना कि फ्रीडम बढ़ गई. फ्रीडम बढ़ गई है, उसकी कहानी बनानी पड़ेगी पॉइंट्स में. एंड रिलेशनशिप विद फैमिली, तो कुछ लोग दूर भी हो जाते हैं, कुछ लोग पास भी हो जाते हैं. इफ दे सेंड बैक मनी, इफ दे हेल्प देम माइग्रेट टू, और इफ दे कम बैक विद दैट नॉलेज, तो दोस्ती बढ़ती रहेगी, रिलेशनशिप विल गेट बेटर. अगर वो इनको अबैंडन करके चले जाएंगे तो रिलेशनशिप विल ब्रेक डाउन. कौन सी थीसिस करनी है इसके अंदर? सो इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर, it leads to exposure, it leads to formation of new networks, pressure on urban infra also increases, work life balance is a challenge. सारी कहानी लिख दो, change in consumer behavior, and you're good to go. It is all about, again, the common factor is catching hold of the theme, which is sine qua non. Final question, this was मेरे हिसाब से the most beautiful question, क्योंकि this was थोड़ा सा difficult to comprehend. If you could just comprehend this question, most of your problems are solved. Critically analyze the proposition that there is a correlation between India's cultural diversity. तो इंडिया का डाइवर्स कल्चर है. अब कल्चर डाइवर्स एन नंबर से हो सकता है, खाने की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, ट्राइबल्स के साथ में रीजनली, एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटी. सो व्हाट इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दिस डाइवर्सिटी and the marginalization that happens on the ground? Simple as that. The only challenge was in your ability to comprehend that. That was a question. थोड़ा सा अजीब तरीके से फ्रेम किया हुआ है. The moment you catch hold of that, the solution becomes very very simple. कि बिल्कुल ठीक बात है. Due to different languages, sometimes when you migrate from one region to another, there are linguistic chauvinism, और उस चक्कर में एडजस्ट करना चीज़ों को डिफिकल्ट हो जाता है. Similarly, due to cultural disparities, when you migrate from one region to another, you will have to try to kind of fit in there, and that is why you come on the margins. you know Answer is going to be very very simple, but the only challenge was in understanding the question कि क्या diversity mostly is positive, but क्या diversity could be negative? The question is critically analyzed. Mostly you will have to disagree. In the beginning थोड़ा सा दिखा दो how diversities might lead to negative things, that is marginalization, but overall diversity is good. Structure should be very very simple and you'd be good to go. So कोई rocket science नहीं चाहिए, basic knowledge
application using common sense, exhaustive analysis of PYQs. If you want to do the PYQ analysis with me, please be my guest. You can watch the free demo videos, or you can go through the course structure. Even if you don't want to join the module, absolutely, I don't care. At least watch the free videos on YouTube, and feel free to join the Telegram channel for absolutely free guidance, and to get any of your doubts resolved about this preparation and beyond. I am sure इस सेशन के बाद थोड़ा सा इस एग्जाम का हुआ कम हुआ होगा. I will try to create similar videos for the rest of the GS2. If you have any comments, any feedback, anything else, any more assistance you need from me, please feel free to comment. If you like the video, feel free to like it, share it, and hopefully I'm going to see you soon. Take care. Best of luck. Bye.